संक्रमण 24 घंटे 7178 पॉजिटिव चिन्हट होती सहित देश में एक्टिव केस संख्या 65,683 पहुंची। सेपरी 26 जनकर जीवन नहीं महामारी। विगत 2 दिन धरी राज्य में कोरोना संक्रमण पीक रे रहिबा परे पुणी तलमुहा होईछि कोरोना ग्राफ। देश में अपेक्षाकृत भाव में कमी कोरोना संक्रमण 24 घंटे 7178 पॉजिटिव चिन्हट होती सहित देश में एक्टिव केस संख्या 65,683 पहुंची। सेहीपरि 26 जनकर जीवन नहीं महामारी। तेज संपर्क में अधिक आलोचना करने आम सहित रही वरिष्ठ चिकित्सक प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चौधरी आम सहित रही। प्रोफेसर चौधरी आपको स्वागत करोडिया को। प्रोफेसर चौधरी जो भाव में संक्रमण ग्राफ 2 दिन उपरमुहा रहा बर्तमान पुणी कमुची आपको कौन लगुच कमुवा ग्राफ आहरी तल को खसब ना परवर्ती समय पुणी बढ़ी पारे? नहीं देखो आम कि देखुचे प्रायतः ग्राफ एमती माने ऊपर तल रोचे फ्लक्चुएट रोचे तेणु आमको देखा पड़ो आमको जगिया पड़ो सप्ताह जदि एमती संक्रमण संख्या धीरे धीरे कमिबा आरंभ हो तो कहीपर हाँ गोटे शीर्ष छुईगला पुणी गोटे तलमुहा संक्रमण ग्राफ आरंभ हम गोटे दिन रिजल्ट आम बेसी किसी कहीपर आम आगु देखुले 10,000 ରୁ 12,000 भितर संक्रमण संख्या फ्लक्चुएट होता तो भावुले कोटा कोटा शीर्ष पहुंची गलानी। एवं आज तो एमती आम एक्सपेक्ट करुचे जेहेतु वीकेंड टेस्टिंग मात्रा कम तो संख्या तो सेमती कम आसा स्वाभाविक। तेणु आगामी आगु को आमको आ 4-5 दिन देखा पड़ो संख्यार रूप कौन रोचे केते लोक संक्रमित होती केते संख्या दैनिक संक्रमण संख्या केते रोचे किंतु जहाँ बेले आमको आहरी कहि 2 सप्ताह आमको आहरी जगवा पड़ो कहीं आम आगु भी जानीचे जे जदिव लहरी आरंभ हो जाए लहरी आसी एते हुए तो घातक कि मारात्मक न हो पारे किंतु जहाँ बेले गोटे आरंभ हो मिनिमम 6 सप्ताह तो जहाँ बेले गोटे लहरी गोटे रमती उपमा ग्राफ किस दिन संख्या बढ़ला पुणी गोटे आम आशा करुचे गोटे प्लाट्यू फेज कि समांतर फेज आरंभ हो गला पुणी धीरे धीरे आगू कमी आरंभ हम तेणु जहाँ भी हेल्ले आम सतर्क रहा सचेतन रहा कि गोटे मुख्य जिन देखुचे देशर मृत्यु संख्या गोटे आमको चिंतार पकाउे आम देखुचे लोक भी मृत्युवरण करियो से हिसाब से अनुपात हिसाब से लोग निश्चित भाव में कहीपर जेहेतु कोरोना संक्रमण बर्तमान कमुची किंतु सतर्क रहिबार एबे भी आवश्यकता रहुची। समस्त सतर्क रहिले कोरोना ठारो आम सुरक्षित रही पारिबा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर सूर्य प्रकाश चौधरी होते वरिष्ठ चिकित्सक आम सहित अधिक आलोचना करते। भुवनेश्वर G20 एजुकेशन वर्किंग ग्रुप सम्मेलन ने आज द्वितीय दिन भुवनेश्वर IMMT परिसर में यह चली। आज मुख्य अतिथि भाव में केंद्र स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इलेक्ट्रोनिशिप एंड एंटरप्रमोशन टेक्नोलोजी मंत्री राजीव चंद्रशेखर जोग देइछन्ति। से मध्य निजर वक्तव्य रखुछन्ति। आसंतु यार सीधा सरल प्रसारण देखिबा। The conference is of course about the future of work and skilling, and there is a sub context to it that has been beautifully phrased. It is at the intersection of logistics, coastal economies, sustainability, skills. So this is an interesting opportunity to not just to talk about skills, but skills in the context of logistics. Not just to talk about logistics, but talk about logistics in the context of coastal economies. And not just to talk about the coastal economy, but to talk about that in the context of sustainability. So as Mr. Muti very nicely put out there for everybody to understand, we are really talking about future and work and skilling, but talking about future of work and skilling in the context of these trends, in the context of logistics becoming more and more important, in the context of coastal economies becoming more and more important, and sustainable growth becomes certainly one of the articles of faith in how we shape our future, how we shape our nation's future and the world's future. Let me share some of my thoughts with you, and then of course you have the whole day of seminars and workshops to also listen to, but let me just share some of my thoughts with you. India's presidency of the G20 is certainly at a very interesting time, and I use the word interesting in a very broad sense, interesting time for the world. And this interesting time for the world represents both opportunities and challenges.
we are as a world coming out of this serious disruptive black swan event called the COVID pandemic that laid low people's lives, livelihoods, economies all around the world. And then if that was not bad enough, who would have thought in the year 2022, 2023, Europe, which has seen World War I, World War II, and should be the last place for another war in this modern age, we see another war, the Russia-Ukraine conflict. Both these have important determinants into how the world is getting redrawn, how the world order is being reshaped. Let us for a minute think about COVID pandemic. There are many students here. You all understand the concept of exams. You all understand the concept of report cards. It is like the whole world, every country, every people, every government went through an exam, a trying exam, a disruptive exam. The US, China, India, UK, Japan, Korea, all the peoples of each of these countries had to go through this trial and tribulation of the COVID pandemic. And after the pandemic, if you look at the report card of which country has done well, which country has not done well, which people have performed admirably during this difficult period, go to the West, look at the US,